Hi everyone, this is Ashish Kyal here. I hope I am audible to every one of you and you are doing fantastic with the markets going all over the place, moving down towards that 16,410, rallying back from there towards that 17,150 levels today, moving back below that 17,000 and you are wondering कि markets में हो क्या रहा है इतनी उठा पटक ऊपर और नीचे की ओर हो रही है तो करना क्या है बाय करे कि सेल करे और इसे जाना कहाँ है कि ऊपर की ओर का ट्रेंड शुरू हो गया सो इज इट स्टिल बाय ऑन डिप्स और इज इट सेल ऑन राइज क्या आपके दिमाग में ये सब चल रहा है दूसरी चीज जो मैं रीड कर पा रहा हूँ आपके माइंड में क्या होगा कि फिलहाल मैंने स्टॉक्स जो मेरे लॉन्ग थे एंड जैसे ही निफ्टी ने अराउंड 16,900 16,800 लेवल्स ब्रेक किए या 16,700 ब्रेक किए तो वहां निकाल दिया एग्जिट कर दिया लॉस में उसके बाद में वापस से निफ्टी 17,000 के ऊपर आया तो वापस मैं लॉन्ग करूं अभी तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज होना चाहिए था उसके बदले बाय ऑन हाइज एंड सेल ऑन लोज हो रहा है so that's a very peculiar behavior that is happening because the movement that is happening on the upside or the downside is sharp, it's fast, and you are trying to make sense out of it. So that is very important in this kind of market scenario. I i will thoroughly ask you to learn about Elliott wave. The reason I'll tell you, it has given an amazing outcome. I'm just going to share across a very quick chart with you all, and which we were discussing on a Wednesday with the mentorship revision session. So let me share that chart again with you. I just took a snapshot from there, and let me just share it across. क्या ये screen दिख रहा है आपको? Are you able to see my screen here? I want everyone to participate in the chat that you are seeing. A very good morning, Naveen, Preeti, D'Souza. Great to see you again here. Oindrila, I'm glad to see you. I've seen a lot of your comments on YouTube. It's fantastic. And Ajindra, uh, बहुत कुछ चाहते हैं मार्केट से लेकिन क्या हो रहा है देखना चाहते हैं राइट सो ग्रेट गुड मॉर्निंग टेक्निकल मेहता टू यू एज वेल एंड above that a very uh, it's just a Christmas time, right? Most of the global markets are off today, so wishing you all a very happy and Merry Christmas. So let's just look at the chart now. It is very crucial to see this, and यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट मैंने 2 दिन पहले बनाया था. This chart clearly represented that what is the overall market movement should be, and you can see that on my screen. तो ऐसा हुआ क्या? Yes, exactly that is how market behaved, right? यहाँ पर से I mentioned that after completing this A or whatever C wave जो भी है, यहाँ से एक पुल बैक आएगा इन द फॉर्म ऑफ A. You saw that, वो तो आ चुका था. B में एक रिट्रेसमेंट. After that we should see a C wave going on the upside. ये अपसाइड कितना जाएगा that is difficult to gauge, but it went till this point. I also tweeted in the morning today before the market opened that 17,200 is a major hurdle that prices might not be able to break above that level. So 17,200 एक बड़ा trend line channel हम बनाएंगे. I'll go to the chart and show it to you. And that is why I said that that's a major hurdle. And exactly by around that 17,150 gap up हुआ, and we are reversing back on the downside. So see this behavior, see this pattern which was shown here. I very clearly discussed in the mentorship revision session also कि हमें pattern चाहिए और वो pattern अभी बन चुका है. Okay, the way I am seeing it is possibly A, B, and C is done now. This fall is possibly in the form of wave D right now that we are witnessing. Post it, there can be one more pullback, possibly in the form of wave E. We have to see that. ये जो pullback यहाँ से ऊपर आएगा, अगर आया तो, we need to see the nature of that. If that takes out 17,200, then we will evaluate कि यार ये बाजार अभी वापस से शायद buy on dips की ओर जा रहा है, शायद. Okay, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए 17,600 का ब्रेकआउट चाहिए बिकॉज वो साइकिल का टॉप था, 55 डे साइकिल का टॉप था. अगर वो नहीं होता है, अगर 17,400 17,600 लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, तो यहां से जो पुल बैक आएगा, इफ दैट रिमेन्स बिलो दैट 17,200, I would be looking at it as a formation of a distribution again. Once this distribution is over, you are going to see the completion of the D wave on the upside, possibly a bigger D wave which will get complete here, and then the move on the downside will start. So ये जो movement है, it's a non-trending behavior. Please understand that.
ये नॉन ट्रेंडिंग में you will get trapped on the downside, you will get trapped on the upside, and don't crib about it, because ये नॉन ट्रेंडिंग बिहेवियर में the only asset that will work for you and in your favor is what? Tell me that, give me an answer for that. कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा एसेट है जो ये नॉन ट्रेंडिंग बिहेवियर में आपके साथ में काम करेगा? आई एम श्योर दीदार विल बी एबल टू आंसर इट very quickly. Kushal, great to see you, good morning to you as well. And कौन सा एसेट? एब्सोल्युटली राइट, यू नो दैट इट्स ऑप्शंस. अभी ऑप्शंस वाला एसेट है जो आपके लिए काम करेगा. अभी ऑप्शंस में कौन सा एसेट आपके लिए काम करेगा? बाय करके कि सेल करके चलना है? I've been talking about that this is the market where you have to possibly sell and make money. Exactly, Dida, brilliant. Sell calls, right? क्योंकि यहां पर पैसा तभी बनेगा. कल मैंने एक और ट्वीट किया था, क्या आपने वो चार्ट देखा जो मैंने ट्वीट किया था कल के दिन में? Which was an option chart which I tweeted across 17,600 का ऑप्शन चार्ट. अगर कल आपने देखा भी होता वो चार्ट को, आपने रियलाइज किया था how stupid it is to buy deep out of the money options. Let me just share it across. I'm not sure if you have seen that chart. Let me share my Twitter handle and share that screen across for you, because वहां से आपको पता चलेगा कि ये बाजार में ऑप्शन डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बना के आप हीरो जीरो वाला गेम खेल रहे हैं या आप जीरो बन रहे हो उसमें. ये देखिए 17,600 का कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का. यहां पर से निफ्टी हैज रैलीड फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज 16,410. यहां से यहां तक के रैली में कितने पॉइंट का रैली हुआ? कैन यू काउंट दैट? इट हैज बीन नियरली 700-800 पॉइंट्स का अप मूव. एंड लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू द ऑप्शन प्राइस. मतलब आप अगर जेन्युइनली पूरा रॉन्ग भी होते, यू स्टिल मेकिंग मनी. कैन यू बेट दैट? अगर 700-800 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट मार्केट गया है एंड स्टिल you are able to make money out of that is something very interesting. ये मैंने कल दिखाया था जब ये 10 रुपए पे था. Okay, around that 10 rupees. Do you know what is the price quoting on right now? The price that this specific index is now quoting, sorry, specific option is now quoting, I think is around 5 rupees. 50% हो गया उसका price. If you're an option seller, you made money or not, despite of whatever market opened up or down, you made money. And this tweet I did, what time was it? 19 hours ago. This was when the markets were going on and I tweeted that. So this is what is important. लेकिन इसके साथ में ही खाली ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ में आपको वेव थियरी को फॉलो करना है, which I have shown it very very clearly over here on this chart itself. I have shown, let me just go back to the Nifty chart, which I shown during my मेंटरशिप रिवीजन सेशन जो हमारा 2 दिन पहले था. ओके, चलिए अभी के चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है, कौन सा चैनल है. आर यू एबल टू सी माय चार्ट राइट नाउ? ओके, ओके, फैंटास्टिक. सो दिस इज क्लियरली सजेस्टिंग दैट अभी फिलहाल अगर अभी का चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो निफ्टी का है, निफ्टी फिलहाल देखेंगे डेली के ट्रेंड में. दिस इज, आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट राइट नाउ. And if you look at it, it's an outside candle after a doji formation. An outside candle after a doji formation. What do you think? And this is also bearish engulfing pattern forming as of now. दिख रहा है आपको bearish engulfing pattern फिलहाल बन रहा है, अभी क्लोज नहीं हुआ है बाजार. क्लोज होने पे कंफर्म होगा कि ये bearish engulfing वैलिड है कि नहीं. और मंडे को अगर इसके नीचे जाता है, that will confirm a reversal. वेरी क्लियरली. चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो चैनल देख रहे हैं आप, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो जोन है ना चैनल का, सो बाय द टाइम निफ्टी ट्राइज टू कम बैक अराउंड दिस जोन, अराउंड 17,200-240 के आसपास का लेवल है. दिस इज द जोन फ्रॉम वेयर वी हैव सीन मल्टीपल रिवर्सल्स हैपनिंग फ्रॉम द मार्केट एंड द सपोर्ट जोन कम्स अराउंड. इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, दैट इज द सपोर्ट जोन. सी, now what is the wave pattern? That is what you are wondering, right? Because without wave pattern I can't trade, without time I can't trade. तो ये दोनों चीजें मुझे चाहिए. भले मैं ऑप्शन सेल भी कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि बाजार का ट्रेंड क्या है और रुक क्या है, यहाँ पे करना क्या है. तो अगर मैं आवरली चार्ट पे जाता हूँ, लेट्स लुक एट एन आवरली कैंडल. एनीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ द webinar I conducted on candlesticks, Elliott wave, time cycles, if not,
then here is an opportunity. Tomorrow again, I am going to be speaking from 11 a.m. Tomorrow is 25th of December. It's a Christmas day. 25th. This is a gift from me to every one of you who are giving your time to me. Just because you are giving your time, I'm simply loving to discuss across in detail this opening hour candle strategy along with Elliott wave, along with time cycles. And I'm traveling. Still, I'm going to do that because this is what I love talking to you people about. So अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये webinar के लिए register, so please do that. It's going to be at 11 a.m. on 25th, and for registration you simply have to go to wavesstrategy.com/webinar. That is what the session is going to be. So देखते हैं opening our candle strategy क्या है आज के दिन के लिए. Let us just understand that, and I want the mentees to answer me here. What do you think is happening? This session is for you as well, right? यहाँ पर अगर आप चार्ट देख रहे हैं, you might be able to tell me right now यहाँ पर ओवरऑल बायस बेरिश कब टर्न होगा. दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न विच एंगल्फ द प्रीवियस कैंडल. फेयर इनफ. यहाँ पर एक अटेम्प्ट था टू ब्रेक द प्रायर लो, लेकिन क्लोज नहीं किया अभी तक. सो यहाँ से अगर आप देखेंगे, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन मच डिटेल टुमारो, मच डिटेल, नॉट नाउ. नाउ स्टिल वी हैव नॉट क्लोज्ड बिलो द प्रायर आवरली कैंडल लो. सो ये इंपॉर्टेंट है. 16950 का एक लेवल है जो मैंने ट्वीट किया था सुबह, दैट इज टेकन आउट, विच मींस आज का रुख फिलहाल सेल ऑन राइज हो सकता है. द ट्रेंड इज सेल ऑन राइज. टू कैपिटलाइज ऑन दैट, sell calls. That is how I will form an intraday strategy if I have to do that. Now what is the wave pattern that I am going to see it on the chart right now? यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था overall, let me mark it for you. This was A, this was B, the entire fall of this was C here. अभी आप बोलेंगे लो पे क्यों नहीं मार्क किया? Now that's the science, right? उसके लिए तो Master of Waves program which we have on 15th and 16th of Jan. This is Neo Wave. I'm showing it to you. यहाँ पर A कंप्लीट किया, यहाँ पर B कंप्लीट किया. Okay, let me just show it B here. थोड़ा इरेज कर देते हैं. And then post that we have wave C. Possibly wave C is complete. This rise is wave D which is going on. I am not saying wave D is over. Wave D के अंदर ये जो rise था वो wave A था. ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग मार्क करते हैं. ये जो फॉल था ये बी था. यहाँ पर मैंने फोरकास्ट किया था कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा मार्केट में, और यहाँ से पुल बैक जो आया परफेक्ट आया, जैसा सोचा था वैसे. फ्रॉम हियर दिस कंप्लीटेड. नाउ सी, there is a possibility we are seeing wave D. Now how this D goes, very tricky. You might go down, break the low of B, pull back in the form of E, and then we might start seeing a fall. This movement of market is very similar to a pattern which I highlighted, which was seen across in 2011 if I am not mistaken, and very clear pattern. और इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी थी was simply superb. In 2 days of time you can get nearly 500-600 points or more in 2 days of time. I'm telling you that once this pattern gets completed. So यहाँ पर नीचे आएगा जो D होगा, यहाँ E complete होगा, that will complete a D wave. अभी तक assumptions है, and then we should start seeing a bigger downtrend. So यहाँ से जो pullback अगर deep आया, fair enough. I am not buying that story. I will only buy that once I see break that above 17,200, 17,400 ka levels, and then finally if 17,600 taken out, we will change our stand. लेकिन देखेंगे, तब तक wave pattern is very clear. This is I wanted to talk about. So I'm open to any questions that you might have. That is how the markets are looking like. Intraday trade strategy, you can do that. You can apply Ichimoku cloud on top of it to make it wonderfully well, to time it excellent, and you can apply time cycles, of course. So चलिए Ichimoku cloud अगर apply किया, you can clearly see the hourly cloud, how it has behaved and how it's doing from here. यहाँ ही से turn हो गया from that cloud. I think ये future cloud plot नहीं कर रहा है. Let me just show another cloud which is proper, and इसे hide कर देते हैं.
चलिए, so this is proper and this is showing a very clear what is the market about to do. Okay, हम cloud के अंदर है, within the cloud, which means what? Non-trending behavior. So sell calls, sell put क्यों नहीं करना है? Okay, that is the question that many of you might be asking. क्योंकि पुट सेल करने में यार मेरे को तो रिस्क लगता है, कल अगर 200 पॉइंट गैप डाउन, 300 पॉइंट गैप डाउन हो गया, वो रिस्क है। गैप अप 300 पॉइंट होने का चांस क्या है? थिंक अबाउट इट। ओके, इफ यू थिंक कि 200-300 पॉइंट गैप अप होना इजी है, फेयर इनफ, देन यू कैन सेल पुट्स। लेकिन 200-300 पॉइंट गैप डाउन होना, I am not be surprised because that's the nature of how this entire downward trend is. So that is the thing. So current strategy, Daktari Gaurav, yes, sell call is the current strategy. And stop loss के साथ काम करो. I have given you the levels. Now you form the strategy and then do it with the help of Bollinger Bands and all of those things. We will do that together tomorrow. Are you with me? For tomorrow, the link is shared across by my colleague Neha. Thanks for sharing it across. wavesstrategy.com/webinar. कल के दिन में 2 घंटा है हमारे पास में, हम वो 2 घंटे फ्री वेबिनार में ठीक से डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली मार्केट को मंडे से ट्रेड कैसे करना है. So shall we do that? Okay, fantastic guys. So really love talking to you now. I have to go and I have to look at the markets. I thought it is apt for us to come live now. आज का हाई 17150 अगर टेक आउट होगा, यहां से वी कैन गेट अनदर 100 पॉइंट्स ऑन आउट मूव. लेकिन अगर वो हाई प्रोटेक्टेड रहा, कीप सेलिंग कॉल्स एंड वंस इफ वी क्लोज बिलो दैट 6950 मार्क, लेट्स सी अगर क्लोज होता है कि नहीं. फॉर्म योर स्ट्रेटेजी, थिंक. अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो आप क्या कर रहे हैं? So I am here just to assist you. I am a torch bearer. I am a mentor to you if you want to be. I want to help you out. Okay. So we will discuss all of those things, Chaitanya. Thanks, Rohit, very much. And see you tomorrow at 11 a.m. Share across the link with your friends, family members. It's a free webinar for 2 hours. So please be there on time. And we go houseful with thousands of participants. So be there and you are going to really love what we discuss. Looking forward to it, Preeti, me as well. Didar, thank you and have a wonderful day. This is Ashish Kyal signing off, and keep liking the channel if you think, and share it across on the YouTube. So keep sharing, keep liking, and be there. Thank you.